हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको जो लैंग्वेज सेकंड है इंग्लिश, उसके जो पार्ट 4 है मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि डायरेक्शंस इज गिवन बिलो। ये देखेंगे 121 to 129। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब ये 121 से 29 तक ये पैसेज में जो क्वेश्चंस होंगे, ये जो पैसेज है इस अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, तो इस पैसेज को हम लोगों को केयरफुली पढ़ना है और उसमें से जो ये इस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं जैसे 121, 22, 23, तो इस पैसेज से हमको ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसके आंसर हमको मतलब निकालना है। ठीक है, तो इसको केयरफुली पढ़ना है और चलिए पढ़ देते हैं, बाकी आप भी निकालिएगा। ठीक है। Edmund Burke called the press the fourth estate of the realm. I think he did not use this title for the press thoughtlessly as social ruling group or class. The three estates or realm, and in England, Lords Spiritual, the bishops, and the House of Lords, the temporal, other lords and commons. The press has been rightly called the fourth estate, as it also constitutes a ruling group or class like the lords and commons. It can be denied in a free country that the press exercises good deal of influence in shaping public opinion and pointing out the weakness of defects of society or of government, and in general bringing to light all those good or bad things in society which would have otherwise remained unnoticed. The power is not limited or put under any check. The press, instead of being controlled by anyone, controls life and thought of a nation. Hence, the press constitutes an state by itself. Obviously, the power which the press in a country wields depends upon the number of newspaper readers. The opinions and comments of newspaper can influence the life of a nation only when they are read by people. Reading in turn requires that the general mass of people should be educated. Thus, the spread of education determines the extent of the newspaper. Where readers are few, newspaper must necessarily be few. Their influence in that case can extend only to a small minority of population. In a country like India, the percentage of literacy is very low and the standard of journalism is not very high. So press has to play the role of a teacher here. ठीक है, टीचर के रोल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121 क्या कहता है, देखते हैं। The secret of the success of the press is. The secret of the success of the press is. Option is given below. The money which the newspaper owners can wield. Second, the numbers of newspaper readers. The extent to which it supports officially policy. Fourth है the patrons enjoyed by it of the government. तो क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर रीडर्स। नंबर्स मतलब संख्या, न्यूज़पेपर रीडर्स मतलब पढ़ने वालों की संख्या की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर्स ऑफ न्यूज़पेपर रीडर्स इज डिटरमाइंड बाय। ऑप्शन इज द लो प्राइस ऑफ न्यूज़पेपर, द patronage extended to it by the moneyed people, education of the general mass of people, the availability of newsprint। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एजुकेशन ऑफ द जनरल मास ऑफ पीपुल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म फोर्थ स्टेट स्टैंड्स फॉर, मतलब फोर्थ स्टेट है, इससे आप क्या समझते हैं? ऑप्शन इज हियर एन एरिया ऑफ लैंड
landed property, social ruling group of class, instrument of power. राइट आंसर इज सोशल रूलिंग ग्रुप और क्लास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग द वन विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द थ्री स्टेट इज। ऑप्शन इज लॉर्ड्स स्पिरिचुअल, जस्टिस ऑफ पीस, लॉ टेम्पोरल और कॉमन्स। तो इसका राइट आंसर है जस्टिस ऑफ पीस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्री प्रेस डज नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ। ऑप्शन इज shaping public opinion, supporting at all times the official policy, third criticizing government, fourth exposing social abuses। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सपोर्टिंग एट ऑल टाइम्स द ऑफिशियल पॉलिसी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेस एक्सरसाइजेज पावर बाई। द प्रेस एक्सरसाइजेज पावर बाई। ऑप्शन इज हियर enlisting the support of the people. Next, keeping watch over the acts of the government. Third, controlling life and thought of a nation. Fourth, because it is a great money concern. Right option is controlling life and thought of a nation. Next question, the state of journalism in India. Option is first is up to the mark, second is rather low, third is in its infancy, fourth is not very high। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इज नॉट वेरी हाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमुंडे बुर्के कॉल्ड द प्रेस इंस्ट्रूमेंट ऑफ पब्लिक ओपिनियन, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ न्यूज, द फोर्थ स्टेट, लॉर्ड टेम्पोरल। राइट आंसर इज द फोर्थ स्टेट। Next question, how much power does a free press possess? Option is only that much power which is allowed by the government of the country. Second, unlimited power without any responsibility. Third, unlimited power subject to the maintenance of law and order and public morality. Fourth, no power at all. Right answer is unlimited power subject to the maintenance of law and order and public morality। अब नेक्स्ट देखिए 130 and 130 to 144 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक सेम जैसे ही ये है, जैसे आपने ये मतलब इस पैसेज को रीड किया और रीड करने के बाद उसके बेस पर ही ये क्वेश्चंस मैंने अभी आपको करके दिखाए। ठीक उसी तरीके से ये नेक्स्ट है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन शुड बी अडॉप्टेड बाय ऑल स्कूल्स बिकॉज it affords teachers opportunity to test learners frequently. Second, it is the latest development in the field of education. Third, traditional pen power tests do not assess and enhance all the attributes and ability of learners. It frees the learners from students and hard work. Right answer is 3. Traditional pen paper tests do not assess and enhance all the attributes and abilities of learners। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सटीट्यूशन टेबल ड्रिल हेल्प्स टीचर्स इन। ऑप्शन इज हियर गिविंग कंट्रोल्ड एंड लैंग्वेज प्रैक्टिस। फिर नेक्स्ट है डेवलपिंग फ्री राइटिंग स्किल्स। थर्ड, improving the fluency of learners. Fourth, evaluating the listening skills। तो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर प्रोसेस राइटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी फॉलोड। ऑप्शन यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉइंट्स, थर्ड वर्ड लिमिट, फोर्थ लॉजिकल सीक्वेंसेस।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉजिकल सीक्वेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इज ए request to learning a language? Option is motivation, second reading stories, third knowing words and their meanings, और फोर्थ है नॉलेज ऑफ ग्रामर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटिवेशन। Aniya while teaching paragraph. Aniya while teaching paragraph construction should draw attention to. Option is a large variety of ideas, second originality of ideas, third topic sentences supporting details and connectors, fourth a range of vocabulary. Right answer is topic sentence. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज कंसर्न्ड विद। ऑप्शन इज टीचिंग ऑफ वोकेबलरी एंड ग्रामर थ्रू रूल्स ऑफ स्पेलिंग एंड लैंग्वेज, सेकेंड टीचिंग लैंग्वेज टू लर्नर्स फॉर रिटन टेस्ट, थर्ड इंटरप्रेटिंग ग्रामर रूल्स टू सेट द ऑडियंस, फोर्थ इन्हेंसिंग रिसेप्टिव एंड प्रोडक्ट स्किल्स सच एज स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। The right answer is fourth. Okay. Next question है, scanning means darting over much of a text to search for. Option is the central ideas, the opinion of the author, difficult words, fourth a specific items or pieces of information that we wish to discover। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए स्पेसिफिक आइटम और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी विश टू डिस्कवर। A sight word is a vocabulary items that the reader recognize and finds meaningful on sight without a complicated analysis. Second, that needs proper visual understanding of the context. Third, that is to be learned by heart. Fourth, that helps in judging the effectiveness of the author's style। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है फर्स्ट द मीनिंगफुल, ये वाला, दैट द रीडर रिकॉग्नाइज द एंड फाइंड द मीनिंगफुल ऑन साइट, ठीक है, ये वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉग्निटिव कोड अप्रोच फोकसेस मोर ऑन वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, ग्रामर रूल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, ग्रामर रूल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गुड लिसनर्स कैन। Option first, correctly respond to every question asked. Second, recognize how intonation is used. Third, pronounce each and every word correctly. Fourth, understand how to spell a word। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ए करेक्टली रिस्पॉन्ड टू एवरी क्वेश्चन आस्क्ड। इज द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। ऑप्शन इज हियर ब्लूम्सफील्ड, सेकेंड चार्ल्स सैंडर्स, थर्ड है चॉम्स्की और फोर है चॉसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चॉम्स्की, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चंस पसंद आएंगे और पैसेज किस तरीके से करना है आप इस बात को समझेंगे, किस तरीके से इसको रीड करके किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को करना है। और दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि पेपर का टाइम अब नज़दीक आ रहा है, इसलिए मुझे ये याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी मेहनत कीजिए, जिससे कि काफ़ी अच्छे मार्क्स से आप सभी पास हो सकें और मेरी भी मेहनत आपके साथ सफल हो सके।
और मैं पूरा प्रयास करूँगी कि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँ, और आपके क्वेश्चंस मतलब जो आपको प्रोवाइड करूँ वो और ही आपके लिए हेल्पफुल हों। ठीक है, और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।